मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मोहम्मद अनीक अंजम एंड लिटिल वन मोहम्मद अयान अंजम। अयान 3 to 4 मंथ्स का जब वो हुआ तो मैंने अपनी जगह पे ये ऑब्ज़र्व किया कि इसको इसका नाम पहचानने के लिए इसको आवाज़ देते थे, इसको अयान अयान ऐसे कहते थे कि अपना नाम पहचाने, तो ये रिस्पॉन्स नहीं करता था। और मेरी वालदा ने भी कहा कि मैं भी ये नोटिस कर रही हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। देन वी गॉट वरीड और हमने वहाँ पर ही एक ऑडियोलॉजिस्ट है वहाँ पे इसको दिखाया, जिसमें हमें पता चला कि इसका हेयरिंग लॉस अबव 90% निकल गया और इसका इलाज सिर्फ कॉकलियर इम्प्लांट ही है। They visited us, they contacted me through my website, internet. I have operated many patients in Pakistan, and because of better facilities available in this part of the world, they decided to come to me. We organized the hospital, Max Hospital organized all the visa facilities, and they reached us here about 3 days back. पाकिस्तान छोड़ने से पहले जब इसका सारा प्रोसीजर चल रहा था यहाँ इंडिया आने के लिए, तो ये इशारों की ज़ुबान पे आ गया था। ये समझाता था किस तरह से कि अगर इसने मुझे कॉल करना है तो ये मुझे ऐसे हाथों से समझाता था कि यहाँ आओ, इधर आओ, ऐसे मुझे समझाता था। इसने अगर कुछ खाना है, कुछ पीना है तो ये ऐसे अपने होंठों की तरफ हाथ को लेके जाता था कि आई वांट टू ईट समथिंग। फिर अगर इसको नींद आती थी तो ये अपने आँखों पे ऐसे हाथ रख लेता था कि मुझे नींद आई है। और अगर कुछ खा रहा है तो नहीं दिल कर रहा और तो ऐसे ऐसे कर लेता था कि बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा। तो वो चीज़ अंदर से हमें काटती थी कि बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह ये कब होगा। Since it's a very, very small child, 1 year of age, so you can imagine that the child is itself very small, the ear is very small, the brain is there. Although cochlear implant surgery is a ear surgery, it has got nothing to do with the brain. But then everything was so small that creating a space from the outer ear, now this is our pinna, we create an incision behind, we open into the mastoid cavity and we reach the inner part of the ear. So the space is very limited, the vital structures are there, so we need a state-of-art equipment, operation theatre, there shouldn't be any infection, bleeding, so all these facilities are available here. इससे अच्छी फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी हमारे देश में नहीं हो सकती। तो जैसे ही ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद जो है उसका रिकवरी का फेज स्टार्ट हुआ, तो वो भी छोटा बच्चा, उसको किस तरह से केयर करना है, कहीं सर ना लग जाए, ये बहुत ज़्यादा टास्क लगा। It took about 2 to 2.5 hours, and intraoperatively we could test that the implant was functioning normally. All the intraoperative recordings were done. X-ray was taken intraop, which confirmed the position of the electrode in the cochlea. It's been 2 days now, the child is doing very well and the child is being discharged today. The healing process will take about 7 to 10 days, and after about 10 days we will switch on, and we did this implantation, advanced bionics implant, and this is the first newly inaugurated Q90 processor, which was just introduced about last week in India, and this is the first surgery which is being done with this Q90 processor at Max Smart Specialty Hospital, Saket. एक होता ना कि मेरे कान तरस जाते थे कि ये कब अपनी ज़ुबान से मामा बोलेगा, पापा बोलेगा, तो वो चीज़ बहुत मिस किया है मैंने। 6-7 मंथ्स मैंने बहुत मिस किया है और मैं बहुत इम्पेशेंटली उस चीज़ का वेट कर रही हूँ। The most important part of the cochlear implant program is the speech therapy, the rehabilitation, which the child is going to perceive for the next 6 months to 1 year. Without this therapy and rehabilitation, this program will fail. It is important that the earlier we do, the better it is. It is seen that if we operate such children at such an early age, they will grow normally like any other children. Like that the child starts to speak words at about 1.5 to 2 years of age. So now the sound signal is going to go in, and because the sounds will go in, he will automatically start speaking out. Speech therapy is going to hasten the process. The most important role is those of the parents and the auditory verbal therapist. My only submission in such cases is
early identification. In this, I would really like to appreciate the parents, especially the mother, who could make out at such an early age, 3 months, that her child, who was responding earlier to sound stimulus, had stopped responding, and that is what actually gave her a suspicion that he might be suffering from